how do we then survey not just what is being done to education, but what is being done to almost every single one of the special rights that the first few articles, at least the first 30 articles of the Constitution of India, give to the community, right from freedom of expression. People forget that limitations on the azan is a double violation of the Constitution. That not giving permission to Christians for a procession on Good Friday, or not allowing them to build a church in a community because the RWA doesn't like it, is a violation not of just freedom of religion, but freedom of all other things. That the prevention of movement of Christians and Muslims from one place to another, under whatever guise, under whatever explanation, is a violation of many other forms. And this is something I wanted to focus in the 10 minutes that I have in this meeting. Not only is the Constitution being violated without any bothering of what is the national response to it, what is the international revulsion for that, but not only are the institutions being demolished. The Supreme Court, you can see how junior ministers, now no longer junior, but how Minister Rijiju challenges and defies and taunts and baits the Supreme Court, echoing not his instincts as a lawyer and a defender of the rule of law, but as a spokesperson of the RSS and the BJP, and of course the Prime Minister and the Home Minister of India, who do not want an independent judiciary. Not only are all the other institutions have said, the National Minorities Commission, the National Commission for Minority Educational Institutions, commissions in the states, the sort of edging out of the National Commission for Scheduled Castes and of Scheduled Tribes and of minority languages. There is not a single institution in the country which has not been sidelined, which has not been eroded, which has not been entirely made dysfunctional. So here is a group of minorities, 20 crore of them, if at least collectively, who do not have any longer the protection of the law, the protection, the guarantees of the Constitution, the protection and the guarantees of the United Nations Charter, the protection that every human being has. So today, we lag behind in our human rights and minority rights behind some of the worst countries in the world who we denigrate every day. We are far behind that. Even our visa laws are tainted by religious identification. If you are a Christian, you may be allowed to come in, but only from Pakistan, not from Burma, where Christians are being killed every day. If you're a Muslim, you can't escape the tyranny of some areas of Pakistan, some areas of the Northeast, and from Bangladesh, you just can't come because you're a Muslim. A Hindu could come. So here we are, such a bizarre range of laws that have been communalized. Development itself has been communalized. If you're a Dalit Christian, you will not get any protection of the law, you will not get any scholarship, you will not get any reservation in jobs, and the same goes for Pasmanda Muslims. Such a situation to focus on where is education going today, and where is, as a counterpart, education being perverted, because they go hand in hand. While Christian and Islamic educational institutions are being targeted, their managements are being targeted, where RSS wants to have its Numainda, its representative on managing committees. You find that education elsewhere in government schools has been communalized. It is, for all
intents and purposes are Hindu education, right from the prayers in the opening meeting of the school, to the slogans on the wall, to the pictures of the heroes and the great men on walls and classrooms. Everything speaks of, would you call it a national culture or only a Hindu culture? When Saraswati statues are being forcibly installed in Catholic schools, of which I am a representative. What is that? The national education policy seems to codify it. It is designed, and I've been writing and speaking on it for 3 years, ever since the first proposal was made, and we got our hands on the RSS paper, which is the core of the new education policy, which quite clearly wanted education, apart from it being corporatized, apart from everything else, it wanted it to have a so-called national flavor without defining what a national flavor is. Is my flavor not national? Is a Muslim flavor not national? For that matter, is a Buddhist flavor not national? The Buddhists have dietary habits exactly like me. They eat everything. They eat everything that moves, as you can see, across the world. And so do I. I'm quite able to. I may not be able to afford it. I may not like it, but I can. Is this there in the education policy? The education policy is designed not only to subserve the purposes of a Hindu Rashtra, but to ensure that religious minorities whose social life is not of a kind, who do not have the finances in many families to get milk and lights and education and a TV and a smartphone so the children can keep pace with education standards. The policy is not designed to nurture them, to see that they make the standard. So they're uplifted. They're provided a ladder to go up. The policy is porous so that anybody who lags behind has to leave, take up vocational courses at class 8, 10, 12, college or whatever. Is there anything in the policy that says we will encourage tribals and Dalits and Muslims and Christians to rise to the very top, to aspire for the IAS, to aspire to be nuclear scientists, to aspire to be astronauts, to aspire, in fact, to be ministers and judges? Is there anything in the policy? If you find it, please point it out, and we'll have another seminar when I will salute that policy. But for today, I think the education policy is in keeping with the denigration, the desecration, the degradation of all of the safeguards which are designed for national and, in fact, for local minorities, religious minorities in particular, but not forgetting linguistic minorities in a Hindi-speaking government. I thank you very much. And once again, I wish you the joy of Christmas that can be practiced in the circumstances. God bless you all. Thank you so much, John, sir. And you have highlighted that how the state and non-state actor are, dismantling the rights given to the minorities and other deprived section in the sphere of religion, culture, education, and every kind of right. And even the major institutions are also being suppressed. Those who are responsible to ensure the rights of minorities and other marginalized communities. So now I will go to M.R. Shamshad Sahab, and he is a leading lawyer in Supreme Court. And Shamshad bhai, आप 10 मिनट में कोशिश करिएगा कंप्लीट करने के लिए, और बेसिकली राइट्स क्या हैं माइनॉरिटीज के, उस पे अगर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. उसके बाद फिर मैं आमिर भाई के पास आऊंगा, वो डेवलपमेंट इश्यूज पे बात करेंगे. तो थैंक यू शमशाद भाई. जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, and it was quite enriching hearing Mr. John Dayal. Amir Bhai is here, and
everybody present. See, it's good that you have been reminding us and the people around that there is a day when at least we should remember that some very, very important segment of the society, group of the society has certain constitutional protection. And those constitutional protection needs to be discussed, deliberated, and told to the people at large. See, as a lawyer, obviously everybody would know that Article 29 and 30 basically ensures rights of minorities in the country, and it has long history. It has background. From the day these rights were discussed and framed in the Constituent Assembly. So first of all, constitutional provision which we have, Article 29 and 30. I don't want to get into detail because 10 minutes may not be good enough to discuss in details. But one thing we have to keep in mind, which I want to make very clear, that Constitution of India is a political document. It is not only a document which one should look at and keep interpreting the provisions set out therein just to resolve certain conflicts in the society of the present day. The problem that we are facing was contemplated well in advance, and it is in the nature of, as Rousseau has said, that general will of the people got converted into compromise, compromise, and it emerged as a document which is a contract. And that contract needs to be respected by the executive, parliament, because the Supreme Court says that certain basic feature of Constitution, which the Supreme Court has stated in Keshwananda Bharti, saying that rights of minorities is in the nature of basic feature of Constitution, meaning thereby it cannot be amended by the parliament. So executive, parliament, and the judiciary, all three have to understand that this is a political document based on compromise. And that document has given two rights which specifically says minorities rights, 29 and 30. But it is not only limited to 29 and 30. 29, obviously, cultural rights of minorities, 30 educational institutions, etc. It has also relationship with Article 19 and 25 of Constitution. So this is a matter of correlation of different provisions in fundamental rights, being Article 29, 25, 20, 30, 19. These are the four provisions which basically plays crucial role while discussing the rights of minorities. Because if there is somebody in minority, that means the group, the non-dominant group, will have certain cultural right, cultural practices. That group may have certain religious beliefs which may be different from the dominant number of people, large number of people, which we may call national minority in India. They may have different way of expression, which may be related to dress code, that may be different from the national majority of the country. So reading 29 and 30 exclusively and only provision
for rights of minorities is not correct. That's what my one message is, that we must talk about 19 and 25 when we talk about Article 29 and 30, as Mr. Dayal was saying. And that's one part. Second part is, the second part of my my view would be, let's see, we in India have seen in last 10 years that there is a lot of debate that why things should not be made uniform. And that has been propagated as if that is the basic concept of constitutional provision. Be it Uniform Civil Code today, be it right to dress, be it right to have your eating practice, be it religious feeling, religious practices. We have seen a large amount of debate coming in public domain, which in a way tries pushing as if there has to be uniformity in everything. That concept we have seen from the Constitution, not only from the Constitution. The Supreme Court in 2002 TMA5 case said that every practice is important and every practice needs to be protected. So the way system has emerged in recent time is very disturbing, which I can say Mr. Dayal has already explained this. Third aspect is that whenever we have seen any serious issue coming for adjudication in court system, then also we don't find very encouraging interpretation being given to the constitutional provisions. There is a judgment called Aziz Basha of 1967, written by Justice Vanchu for 5 judges in 1967, saying that a university cannot be minority institution. This is a purely Article 30 issue, but it is completely erroneous interpretation. This interpretation doesn't go in constitutional spirit, because if an institution is to be made independent for certain reasons, certain objectives to be achieved, and you say that a university cannot be minority institution, then there is a problem. And who has given this interpretation? The court has given this interpretation. So when it comes for review of that judgment from 1967, nobody bothered. Only in 2019 it has been referred to 7 judges. I don't know what will happen when it will be decided. So I have cited one instance because of the time issue, but there I have many examples, even from the judicial interpretation, that Article 30 has been, Article 29, both have been most of the time treated exclusively without being related to Article 19 and 25. There is one exception which we have seen recently in hijab matter, when Justice Dhulia considered it differently, and that certainly is a good way forward, I think. So it is not only executive, it is not only parliament, they have taken exclusionary view when it comes to minority, right? TMA Pai said that TMA Pai judge have to determine who is going to be minority. Then the state has to be unit to determine.
you will count the population of that state to decide whether a particular community, religious or linguistic, is minority or not. But at the same time, we see that in many of the minority related judgments, the court has said that it will be in national interest that things should go in this particular manner. So there appear to be conflict at many levels. When it comes to executive level, you see that the minority commission becomes nothing more than an organization of ornamental value. They won't work. It's the same way that Human Rights Commission would not work. They will only speak strategically on certain point to promote the agenda of the government. So at executive level, you find that the institutions that have been created, that becomes a forum for an ornamental value to project as if things are going in right direction. When it comes to executive, then you see everything being spoken for the majoritarian sentiment, for the majoritarian values, for the majoritarian culture. And in that background, if you see executive, parliament and judicial interpretation, both coming on the same line, and the common line you will find that interpretation being given, the implementation of Article 2930 being restricted in scope for protection and promotion of the minority rights. It is being shrinked day by day. It is being attacked in public domain. So I don't think right now the spirit of constitution is being given any credence by any of the institution. And we need to discuss this like these programs, and we need to send our sentiments and convey it to the general public that we all are bound by constitution, and the interpretation of constitution has to come up in the right spirit, so that the purpose for which it was incorporated in constitution is achieved. So in this limited time, I'll say only this much. And thank you very much for giving me an opportunity to interact here. And I feel that if we keep these programs which are more interactive, then that will serve a great cause to this issue. Thank you very much. Thank you, Shamshad bhai. I think you have very clearly told us that only provision of the constitution or institutions are not going to solve our problem. Basically, those who are implementing, they have fair mindset, they have good intention, and even they also need to understand the spirit of the constitution. So I think that is very important. Thank you so much for joining. And I would like to request Amir bhai now. And बहुत शुक्रिया जावेद भाई, thank you so much. Thanks Shamshad bhai, John Dayal saab for setting the tone. As always, it is such a pleasure listening to you. और आप दोनों ने जो वाज़ेह किया, that I'm sure is of great importance and use to everybody in this very interesting and important session. तो बहुत शुक्रिया जावेद भाई. मैं दो तीन बातें कहना चाह रहा था. सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए, जहां तक माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के डेफिनेशन का सवाल है, हमने जैसे शमशाद भाई ने भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक और
रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों को हाईलाइट किया और बड़े साफ साफ तौर पे आर्टिकल 30, 350 वहाँ पे साफ साफ कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का इख्तियार है पूरा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को पूरी इंडिपेंडेंस है। और आगे बढ़ के हमने ये भी कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की भी मदद उतनी होनी चाहिए जितनी नॉन माइनॉरिटी को। तो हमने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था वो बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर था कि इंडिया ऐसा मुल्क होगा जो माइनॉरिटीज को न सिर्फ जगह देगा बल्कि प्रोएक्टिवली माइनॉरिटीज की पोजीशन मजबूत करेगा। और इस वजह से ये जो पिछले 7-8 साल की आइडियोलॉजी में क्वेश्चन उठे हैं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करते हैं और हमारी कंट्री की आइडेंटिटी को बदलने की बात कर रहे हैं। इस वजह से हम में से कई लोग तशवीश में हैं और परेशान हैं। इसका जस्टिफिकेशन उमूमन इस तरह से मिलता है कि भाई देखिए बाकी दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और सऊदी अरब में क्या हो रहा है, और ये बड़ा अफसोसनाक कंपैरिजन है क्योंकि हमने कभी भी अपने आप को उन मुल्कों के साथ कहाँ कंपेयर किया। और हम थोड़ी अपना बेंचमार्क ऐसे रखें जो हमारे नीचे है। हमें तो बेंचमार्क चाहिए कि हम यूरोप रखें और अमेरिका रखें। हम अगर हमारा बेंचमार्क ही लो रखें तो हमारा मुस्तकबिल जो है बड़ा वीक है। So therefore the first point I want to make is that the basic structure of the constitution, the basic principle and the basic ideology behind India's constitution and the setting up of an Indian nation was the protection and the respect for minority rights and for the encouragement of minorities. ये बड़ी प्रोग्रेसिव बात थी जो 70 साल पहले हमने की और इस बात को न सिर्फ हमें प्रिजर्व करना चाहिए बल्कि we should also celebrate it. It is not just is the big political economy in the last 8 years कि हम जो है हमने सेलिब्रेट करना बंद किया। हम कहने लगे कि सेलिब्रेशन इज इक्वल टू अपीजमेंट। उसके बाद हमने उनको टॉलरेट करना बंद किया। हमने कहा हम टॉलरेंस पे बात आ गई और अब सर्वाइवल पे बात आ गई है। सो ये 3 स्टेप्स से जहां हमारा माइनॉरिटी ट्रीटमेंट नीचे की तरफ आया है, ये हमारे मुल्क के लिए खतरनाक बात है। इट इज नॉट सो मच एन इशू ऑफ द मुस्लिम और द क्रिश्चियन अलोन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज फ्रॉम अ प्योरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज दैट अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हमारा मुल्क अभी भी बहुत गरीब है। हमारी पर कैपिटा इनकम अब जाके $2000 हुई है, यानी 1.5 लाख रुपए पर ईयर, विच मीन्स कि हम अभी भी जरा सा ऊपर उठे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत ही लो इनकम कंट्री हैं। जिसका मतलब ये कि तकरीबन 90% आबादी हमारी, और ये नीति आयोग के फिगर हैं, तकरीबन 90% आबादी हमारी $300 से कम कमाती है महीने में, और 85% ऐसी आबादी है जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपए से कम है महीने की। तो इसका मतलब कि हम बहुत गरीब लोग हैं। अगर इन गरीब लोगों में फिर हम तफरका करने लगे तो हमारी गरीबी कभी बहुत मुश्किल से मिट पाएगी, क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर हमें गरीबी कम करनी है, वो जो 27-28% गरीबी है हमारे पास, उसमें से अक्सरियत, बड़ा आयरॉनिकल सिचुएशन है कि the majority of those who are poor are from the minorities, are from either the religious minorities like Muslims or from the caste minorities like the scheduled castes and scheduled tribes. So unless we are able to address that question directly, we will remain a country that has 300 million very poor people in the world. ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है कि इंडिया जब हमारी ओवरऑल जीडीपी 5वीं हो गई है दुनिया में, तब भी हमारे पास 25% ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सबसे गरीब में काउंट किए जाते हैं। तो उनको अगर हमें ऊपर उठाना है तो उन पे खास तवज्जो देनी चाहिए, न कि ये कहें कि अगर हम किसी की गरीबी की मदद कर रहे हैं तो अपीजमेंट हो गया। तो ये दूसरी बात।
बड़ी अहम बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हमको, हमारा विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए और हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक हो जाए। अगर हमें बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमें डिमांड बढ़ाना होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो रतिन रॉय ने कही थी 4-5 साल पहले कि इट इज नॉट अबाउट कंजम्पशन, इट इज अबाउट डिमांड, इट इज नॉट अबाउट प्रोडक्शन। हम अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी तो हमारा बढ़ गया है और हम 5वें पोजीशन पे हैं, लेकिन हमारा कंजम्पशन वो 2017 में जो था उसके बाद घटने लगा है। और जब कंजम्पशन घटने लगता है तब ग्रोथ घटने लगती है और जब गरीबी बढ़ने लगती है, और वही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में। अगर आप देखें तो ऐसा, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने ज्यादा लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो अब भुखमरी से के शिकार हैं। यानी 150 मिलियन लोग, यानी 15 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। कोविड के बाद ये फिगर 10 करोड़ से 15 करोड़ हो गई। और दूसरी बात ये कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और कम से कम 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी ढूंढना भी बंद कर दिया। उसको कहते हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। तो हमारा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट आधा हो गया, और इस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के आधे होने में again a major contribution comes from the minorities because they are the most vulnerable and they are the ones who immediately feel कि हमें नौकरी ना मिल सकती है, ना हम इसको ना हमें इसमें कोशिश भी करनी चाहिए नौकरी ढूंढने के लिए। So if we want to escape this situation of acute unemployment and acute hunger and acute malnutrition, हमें चाहिए कि हम we pay a certain amount of attention to the minorities. Minority deprivation is an important part of the overall growth of the country, and that is something that I wanted to point out. So I just wanted to make these two big points. एक कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा मुल्क ऐसा है कि जिसने तय किया था कि हम माइनॉरिटीज को सेलिब्रेट करेंगे, और ये वजह थी कि हम में से बहुत लोग डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया। वरना हम भी औरों की तरह, जैसे हो रहा है पिछले 7-8 साल में, लाखों लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, और ये अक्सरियत वाले लोग हैं। तो हम सब इसीलिए रुक गए क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक ऐसा मुल्क है जो माइनॉरिटी सेलिब्रेट करेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनलेस वी फोकस ऑन द माइनॉरिटीज, वी विल रिमेन a country that has 25% of the world or the most poor people in the world and 150 million of the hungry people. I will want to stop here, Javed bhai. Thank you very much. थैंक यू आमिर भाई। आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया कि जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उसको हम लोग कैसे टैकल करें, और उसमें अगर माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड किया गया, दलित और आदिवासियों को भी, तो जिनका अगर टोटल पॉपुलेशन हम लोग लें तो अराउंड 45% हो जा रहा है। तो उनके बगैर अगर इंडिया ये बोलेगा कि 2030 में वो जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको अचीव कर लेगा, तो आई थिंक इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। और उसके बगैर जो है, मतलब ब्रॉडर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें जो इंक्लूजन है उसको अगर हम लोग नहीं शामिल, मतलब नहीं फोकस करेंगे इंक्लूजन पे, तो शायद जो हमारा होल फ्रेमवर्क है डेवलपमेंट का वो और इनइक्वलिटी को बढ़ाएगा। हमारे साथ अशोक भारती जी हैं, और आप एक बहुत बड़ी तंजीम है NACDOR, एक कन्फेडरेशन है दलित ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको लीड कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आप जो है जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है उससे भी काफी क्लोज हैं उनके हालात को लेकर के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, और आप भी 10 मिनट टाइम लें। वेलकम अशोक भारती जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी। और मैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें, मैं 30 सेकंड के लिए एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मैं मैं आपको एक मिनट, अशोक भारती अशोक भारती जी को होस्ट हैं, वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, फिर तो बहुत अच्छा है। फिर आप शुरू करें, दिखाइए अशोक जी, दिखाइए। ओके। जी शुक्रिया।
ओके, देख पा रहे हैं? अशोक जी अभी तो ये नहीं आया आपका स्लाइड। ओके, थोड़ा सा एक बार फिर से कोशिश करिए शेयर करने की। आप हाँ, खोल लीजिए, खोलने के बाद आपको दिखेगा अच्छा ही अच्छा वो। अगर डेस्कटॉप पे आपके खुल गया होगा वो, तो फिर अच्छा, हाँ डेस्कटॉप पे खुल जाए, ओपन अलाउ हो कर जाए दिया फाइल। मैंने, हाँ ओके अब शायद आ जाना चाहिए। ओके, अब आ रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ऑलराइट। ओके थैंक यू। तो मैं जो बात अभी आमिर साहब ने कही, मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आमिर साहब ने कहा कि हमारे बेंचमार्क जो हैं वो बहुत ही पुअर हैं। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं, और खास तौर से मुस्लिम समाज जो है उसने अपना बेंचमार्क दलितों को बना लिया है। अगर आप देखेंगे कि ये जो है पुअरेस्ट टू रिचेस्ट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया है। आप अदर फॉरवर्ड कास्ट में देखेंगे तो जो पुअरेस्ट हैं वो 9.7% हैं, और जो रिचेस्ट हैं 35.3% हैं। मुस्लिम्स में 20.9% पुअरेस्ट हैं और 17% जो है वो रिचेस्ट हैं। शेड्यूल कास्ट में जो है 28.4% जो है पुअरेस्ट हैं और 9.5% रिचेस्ट हैं। आदिवासियों की स्थिति तो 51% पुअरेस्ट हैं और 5.2% रिचेस्ट हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू just to bring this to your knowledge. Okay, so yeah, तो मैं जो है ये मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि ये जो है इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। ये जो डेटा है इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा है, और कोई मेरा व्यक्तिगत डेटा नहीं है, ये पब्लिक डेटा है। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूं कि मैं जिन लोगों की बात करना चाहता हूं वो जो है वो तो माइनॉरिटीज में भी माइनॉरिटी हैं, क्योंकि मैं दलितों के साथ काम करता हूं, और मैं चाहे पसमानदा मुस्लिम हो, चाहे दलित क्रिश्चियंस हो या बुद्धिस्ट भी जो है, जो तमाम जो दलित हैं, जो ये जो बड़ी माइनॉरिटी है, ये आज के संदर्भ में चारों तरफ से इसके ऊपर हमले हैं। सरकार भी इनके ऊपर हमले कर रही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के भी इनके ऊपर हमले हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको वैसे ही देखती हैं, और जो कॉर्पोरेट है वो तो उनको कभी पसंद करता नहीं। ठीक है, तो आई एम बेसिकली जो वी आर माइनॉरिटी अमंग दी माइनॉरिटीज। एक बात तो मैं ये कहना चाहता था, और हमें समझना है कि ये एक चीज। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस समय का पाबंदी रहेगी, कि ये पहली बार इस देश में हुआ है कि इस सरकार ने एक्सक्लूजन को एक ऑफिशियल फिलॉसफी के तौर पर आर्टिकल, ये जो अमेंडमेंट 103 103 वाला जो अमेंडमेंट है, उसके थ्रू एक्सक्लूजन को एज एन ऑफिशियल डॉक्ट्रिन के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसको पारित कर दिया है। और अनफॉर्चुनेटली दी भाई भतीजेवाद वाली जो जुडिशरी है उसने उसको अप्रूव भी कर दिया है, उसने उसको मान भी लिया है। तो ये बड़ी चिंता की विषय है। जैसे मैं ये जो वकील साहब बोल रहे थे वो मेरे से ज्यादा बेहतर इस तरीके में बता पाएंगे, लेकिन आप समझते होंगे कि 103 वाला जो अमेंडमेंट है, जो ईडब्ल्यूएस वाला है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज तीनों को एक्सक्लूड करता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार के ऊपर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो हमें ये समझना है कि एक्सक्लूजन जिसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल्स है वो एक्सक्लूजन के खिलाफ था, उसको इस सरकार के तहत एक्सक्लूजन को एक ऑफिशियल डॉक्ट्रिन के तौर पर संविधान में लगा दिया गया। हमें ये समझना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये ज्यादा चिंता का विषय है और हमें सोचना चाहिए। और जो है हमें ये मेरी जो चिंता का विषय है, मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, जिससे मैंने बात शुरू की थी, कि इस देश में माइनॉरिटीज पर हमले हैं। दलितों पे तो बहुत पहले से हमले थे, बुद्धिस्टों पे भी हमले होते थे। ठीक है, और कोई बुद्धिस्ट कंट्री, जब भारत में बुद्धिस्टों पे हमले होते हैं, खामोश रहता है। कोई बुद्धिस्ट कंट्री बोलती नहीं है। कम से कम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ग्लोबली इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन है।
वो उनके हक में तो बोलते हैं, हमारे हक में तो वो भी नहीं बोलते। ठीक है, अब जो माइनॉरिटीज में, खासकर मुस्लिम्स में मैं इस बात को लाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मुस्लिम और दलित आमने सामने हैं। जॉन दयाल जी अब चले गए, वो है नहीं यहां पर है, और मैं, आप में से भी कई लोग इस बात पर यकीन करते होंगे जो उन्होंने कहा कि जो पसमानदा मुस्लिम और जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको रिजर्वेशन नहीं है। ये फैक्चुअली सफेद झूठ है, क्योंकि सब स्टेट में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में पसमानदा मुस्लिम सारे के सारे शामिल हैं। मुस्लिम्स की ज्यादातर जातियां सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर शामिल हैं। ज्यादातर सारे दलित क्रिश्चियंस सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में शामिल हैं। दे आर बेनिफिटिंग फॉर रिजर्वेशन, लेकिन वो उस रिजर्वेशन का फायदा उठाने की बजाय वो आज देश के सबसे कमजोर शेड्यूल कास्ट के साथ शामिल होना चाहते हैं। उनका स्वागत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनके हक में हूं कि वो हमारे बीच में शामिल हो जाएं। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपकी लड़ाई तो ताकतवर से थी और आप कमजोर के सिर पर रखकर अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये दो कमजोरों के बीच में लड़ाई सरकार ने तय कर दी है और आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। पूरा का पूरा पसमानदा मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो एक झूठ के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट के आमने सामने आ रहे हैं। आपको समझना है इस बात को, और हमें ये समझना है कि अब तो ये कोर्ट में केस है, कोर्ट में आप लोगों ने, मतलब बहुत सारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लिख के दे रखा है। मैं तो अभी, हम तो नैकडोर तो उसका भी पार्टी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम पार्टी बनेंगे। हमें समझना है कि कहां तो हम एक बिरादराना रिलेशनशिप बनाने जा रहे थे और हम कहां उस बिरादराना रिलेशनशिप की जड़ों पर चोट करने जा रहे हैं। ये पूरे देश के माइनॉरिटीज के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, अधिकार वंचित लोगों के लिए, जो सवर्णों के साथ जिनका मैंने आपको दिखाया डेटा, दिखाया मैंने आपके, रिचेस्ट में 1/3 ऑफ देम आर द रिचेस्ट। उन पर हमारा कोई बात नहीं, उन पर कोई हमारी चर्चा नहीं हो रही है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं हो रही। उनसे तो हम डर के चूहों की तरह घर में बैठे हैं। अगर आज सवर्ण से कोई लड़ रहा है तो वो दलित लड़ रहा है, तो दलित को सपोर्ट करने की बजाय सारे के सारे जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो दलितों के अधिकारों को हथियाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा विषय है और इसको आप लोगों को समझना है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो है ये बड़ी चिंता का विषय है कि कमजोर लोग जो है, कमजोर लोगों की एकता में बाधा नहीं आनी चाहिए। आप लोगों का, आप सब दानिशमंद लोग हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, एकेडमिशियंस हैं। मैं जानता हूं कि सच्चर कमेटी ने क्या किया। सच्चर जी कौन थे? हैं, वो तो कोई दलित नहीं थे, वो कोई मुस्लिम भी नहीं थे, और पंजाब के आंदोलन में उनके पिताजी जो सच्चर साहब थे उनका सबको इतिहास पता है। ठीक है, हिंदू वर्सेस सिख वाला इतिहास भी उनका पता है, हमें पता है। ठीक है, आप देखिए कि सच्चर कमीशन पसमानदा मुस्लिम को शेड्यूल कास्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड कास्ट के साथ कंपेयर नहीं कर रहे उनको, वो हिंदुओं के साथ कंपेयर नहीं कर रहे उनको। और आप उस आइडियोलॉजी को परमिएट कर रहे हैं अपने समाज के अंदर कि शेड्यूल कास्टों से कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे कंपैरिजन करना है तो ताकतवर, यही तो बात आमिर साहब की बात, इसलिए मैं आमिर साहब ने जो बात की मैं उनसे बहुत पहली बार मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को सुना जो कह रहा है कि हमारा बेंचमार्क लो है। अगर शेड्यूल कास्ट आपका बेंचमार्क रहेगा तो आपके लिए तो खुदा ही मालिक है आपका। धन्यवाद। शुक्रिया अशोक भाई, बहुत ही अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के लिए, और कम से कम इस चीज को हाईलाइट करने के लिए कि जो रिजीम हमारे यहाँ जब भी रही है तो उसने जो डेप्राइव्ड कम्युनिटीज है उसमें हमेशा से फॉल्ट लाइन क्रिएट किया है। तो वो फॉल्ट लाइन जो है वो हर टाइम अलग अलग तरीके का होता है। और अभी जो इशू है पसमानदा मुस्लिम्स का, या जो रिजर्वेशन दलित और क्रिश्चियन मुस्लिम्स की जो बात है, उसमें अभी जल्दी ही मैंने प्रोफेसर सतीश देशपांडे का एक लेक्चर सुना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज में। तो उनका ये कहना था कि मुस्लिम्स में अभी फिलहाल जो है वो लगभग मुस्लिम्स का 2% जो है वो मतलब दलित मुस्लिम हो सकता है अमंग मुस्लिम्स।
और रहा जहां तक मामला पसमानदा मुस्लिम्स का जो आपने बताया, तो काफी हद तक कैटेगरीज जो है मतलब वो कवर्ड हैं, लेकिन वो जो उनके कंटेम्पोररी कास्ट वाले हैं उनसे वो कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं। और उसमें दोनों चीजें भी हो सकती हैं, बट जो डिस्क्रिमिनेशन या ताज्जुब जो माइंडसेट है वो भी काम करता है। वो प्रिपेयर्डनेस की भी बात हो सकती है कि वो कॉम्पीट करने के लिए कैसे किया जाए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वाला इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है इन कम्युनिटीज का, इसलिए वो अभी तक उस चीज का फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। और मुझे लगता है और कि मैं यहाँ एक पे बात कहना चाहता हूँ, जी देश पांडे जी हैं, ध्यान रखिएगा। जी देश पांडे जी हैं, ध्यान जी रखिएगा। जी जी जी। तो थोराट नहीं है, देश पांडे है। थोराट साहब ने ही उनको बुलाया था। नहीं नहीं, हम जाति से और मतलब कि जो बैगेज है हमारा, हाँ उस बैगेज को हम अपनी थॉट से अलग नहीं, ये देश में कोई व्यक्ति अपने बैगेज को अपने थॉट से अलग नहीं करता। ध्यान रखिएगा इस बात को। कहां साइलेंटली वो आपको हमारे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उसको आपको सोचना है। हमें हमें तो पता है, नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप। हम किसी देश पांडे, किसी पांडे, देश पांडे, दुबे, चतुर्वेदी को यकीन नहीं करते हम जी। तो शुक्रिया अशोक भाई बहुत बहुत, जो कि ऑडियंस को भी थोड़ा एक फूड फॉर थॉट मिला इस चीज को लेकर के। और नाउ आई वुड कॉल अपॉन टू सुनीता जी, एंड शी इज अ वेरी लीडिंग वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, एंड नाउ शी इज वर्किंग ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। तो वेलकम टू सुनीता जी। Thank you, Jawad ji. My Hindi Urdu is not very good, so I will stick to English. Yeah, please. Yeah, I basically have, I mean, there are, I wanted to be part of this meeting because I was very disturbed by the cancellation of the Maulana Azad fellowships. That is for the research scholars in the universities. And some of the little bit of understanding that I have got over the last 15 years of my work is something that I wanted to share. A lot of things have been already said. So what I would say probably is would be very sketchy. And my work basically involves understanding Muslim reservations here in Andhra, Telangana. The kind of Muslim women's activism and Muslim political questions here in Telangana, Andhra Pradesh. So from that basis, what I say is on that basis. Also, as a women's rights activist, I also know that as a minority, women definitely have been one of the largest minorities in India. And I understand and I completely stand with all the other minorities, as minorities are under attack. Caste minorities, religious minorities, and gender minorities are under attack in India. And as in that sense, I understand what is happening. I would like to flag the question of minorities within minorities also, but not in the sense that Ashok Bharti ji has said, not to pit against each other, one against each other, because that does not work at all. It is something that so that the powers that be do not use one against the other, do not use us against each other. In that sense, I thought that one should also talk about Muslim women, the way that question is getting used by the BJP. The first thing that I wanted to start with is that I am, from my reading, I understand that Indian Muslims entered the Republic as distinctly as disadvantaged because they were asked to depend on the goodwill and generosity of the majorities. And this is what Nehru had said. And there, the reservations in education and employment were withdrawn
in the last minute. Not only Indian Muslims, but Indian religious minorities in that sense. So as Shamshad Saab was saying, Indian Constitution is a political document that was arrived at that point. And it is a political document that reflected the political mood of the nation at that point. For almost 3 decades, this political mood continued, that especially Indian Muslims, have to stay as a dormant and should not speak that much and should not challenge their own conditions. And it's only in the 1980s almost, that many minorities, caste minorities and other minorities, actually started realizing, this is the second point that I want to say, that they actually started realizing, including women, that the development model, the developmental state that India inaugurated, in fact, is not delivering in the way it's supposed to. We believed in the trickle-down policy, and the trickle-down wasn't happening unless different minorities are actually taken into consideration as active participants, and their specific interests and specific disadvantages and specific lacunae and limitations are brought into the development model. They would not get the benefits of this trickle down would not work, is the realization that led from 1980s, whatever we say, the emergency time, the 20-point program, in a sense, is one of the unfortunate origins of this addressing the different minorities in that sense. And we see that actually continuing in the 90s much more actively. Reservations at different levels, actually, there are movements for implementation of reservations. There are movements for including different minorities in the developmental planning. And by the 12th plan, you have a much more detailed kind of a planning, that we see. So you have minority development corporations and that we have got. And also by 2000, we get some sort of a fellowships and which are specifically for different kind of minorities, and especially in higher education, we see Rajiv Gandhi Fellowship that is being given to Dalit students, and almost at the same time, Azad Fellowships being given to the women, to the students in education institutions. And over the last 10 years, what we see is a enormous growth of these students, and their presence in the education institutions is something that is extremely welcome and extremely heartening. Even when I was a student in 1990s in the University of Hyderabad, I did not see many Dalit students. I did not see the very, very few Dalit students. We were all part of 2 groups, Ambedkar Students Union and Progressive Students Forum, but they were small in number. But now we have large presence. I mean, large not in that sense, but definitely much larger presence of Dalit students and Muslims, now Muslim students. Now I go back to the university, I can see that there is a presence of Muslim students, and who are more organized and who are more able to raise issues about discrimination, of political questions. We saw Rohit Vemula, and there is a way in which universities have actually got energized. I'm emphasizing on the universities because universities are a public space in which, in India, they are probably the only public space in which students can sit beside each other, and actually talk to each other in our caste, religion-ridden society, where people do not, in fact, even meet and eat together. This is a place, public universities are a place where they actually can meet and look at each other, see each other, learn from each other.
And I'm not saying there is no discrimination, but these are the public places that are actually educating the nation into educating all our people into, in fact, thinking about themselves as a community, as a national community. And in fact, this presence of these multiple minorities in the university spaces is something I believe is definitely something I believe is threatening the current dispensation. And this is the current dispensation, which is why it is trying to, in fact, dismantle, reduce, introduce a lot more. For instance, net qualification has been introduced as a thing for applying for Rajiv Gandhi Fellowship and Maulana Azad Fellowship also. And so this is the way in which there is an attempt to curtail the entry and flourishing of the minorities communities in the public universities. And the overall environment that you all have, in fact, outlined and discussed in detail is the thing that we are faced now. That there is a pushback, there is a backlash, there is a pushback against the growth of or in fact democratization of public institutions, little bit of democratization of public institutions by the current dispensation. And this is the context that we are facing now. All of you, the other speakers have talked about the way in which higher judiciary and various institutions are being demoralized and actually made dysfunctional and weakened in the current dispensation. I agree with all of them. The one point, the third point that I wanted to actually raise is because we are celebrating Minorities Day, that we need to recognize there are minorities within minorities, and women are, of course, women are being pitted against each other. Hindutva women are being pitted against other women, and they are being promoted as this religious symbols, and not only religious symbols, they're being filled with hate and hatred and viciousness against the other women, which has been happening in the last 30 years. One point that I wanted to alert is that the way Muslim women's question is being used by the BJP is something that we need to be alert to. It is not that Muslim women either support the BJP or support the, as they say that they are voting for the BJP, and that is a spread of falsehood. But if that question is not picked up by us in a serious sense, it will get picked up by the BJP. It is being picked up by the BJP, and some Muslim women are being pitted against the other, and anti-Muslim women's reforms are being passed. Triple talaq is one. We don't know what else they will do. Various kinds of things they will keep doing it, and it is high time that that question, the concerns are picked up by groups like us, groups like you, groups like who are there in minority communities. The concerns of minority women have to be seriously considered. Thank you. Thank you, Suneetha ji. And you have highlighted the issues related to women education, and also the planning of the current regime, and particularly those who are suffering. They have become reactionary, but they don't have any particular planning to how to address the issues. So thank you so much for joining. And we have some speakers before going to our chair, Tanveer Saab. So we have Aslam Advocate Saab, and he's from All India Educational Movement. तो अभी जो स्पीकर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज 3-4 मिनट टाइम लीजिए. असलम भाई, और भी लोग हैं हमारे साथ. मंजूर साहब हैं,
खालिद साहब हैं, आरिस भाई हैं, फवाद शाहीन साहब हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोग लीजिए। शुक्रिया आसिम साहब। Thank you very much, Javed bhai, for giving me opportunity. जैसा कि मैंने अभी सबसे सुन पाया, this has been a very good discussion and I will not take long. Am I audible, Javed bhai? Hello. असम साहब आवाज आपकी आ रही है, लेकिन बहुत धीरे से आ रही है, धीमी आवाज आ रही है। अच्छा, ओके। हाँ, अब थोड़ा ठीक हुई थी आवाज। अच्छा, ठीक है, ठीक जी, आवाज आ रही है। बहुत ही मुफीद गुफ्तगू ये हुई है और मेरे ख्याल से मुख्तलिफ जावियों से बात हुई है। शमशाद भाई ने उसको एक जाविये से बात सामने रखी है, आइन में क्या मौजूद है, और जॉन दयाल साहब ने उसको उसका एक समाजी पर्सपेक्टिव दिया, और आमिर भाई ने उसका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दिया, और अशोक भारती साहब ने भी एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव दिया जो कि काबिल गौर है। I just want to add one or two things. For example, there was a reference to Article 29 and 30 and my rights of minorities. Minorities are not so easily defined, but one definition of a minority can be that there is a numerical minority, and a numerical minority in a democratic country will mean that it doesn't enjoy much political power. And then there is a concept of a non-dominant minority or a weak minority, and I think both these concepts are highly interrelated. In our country, if we look at minorities from the point of view of state, then we must realize that ours is not a fully federal country. Ours is a quasi-federal and quasi-unitary country. हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो अगर हम ये मानेंगे कि माइनॉरिटीज को स्टेट यूनिट में लेना है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे स्टेट्स जहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है, मिसाल के तौर पर आप कश्मीर मान लें, कश्मीर में मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी, पर कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में होने की वजह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का एक डाइकोटोमी है जिस पर हमको गौर करना चाहिए कि क्या माइनॉरिटी को हम सिर्फ स्टेट वाइज मान लें, क्योंकि हमारे देश में केंद्र सरकार के पास सबसे ज्यादा सत्ता है। और दूसरी एक अहम बात ये कि नो डाउट हमारे मुल्क में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट में पॉलिटिकल कंसर्न्स हर कम्युनिटीज के हैं, और ये सब एक पॉइंट ऑफ इनसिक्योरिटी से आता है। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है, अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे, यू फाइंड कि ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, नॉट फ्रॉम a minority linguistic minority or from religious minority, but almost every person who belongs to a particular caste or community has a feeling of being wrong. Whether that feeling is right, that feeling is wrong, I'm not going into that. This is not the forum. But almost every community in this country, from Kashmir to Kerala, from Gujarat to Northeast, whether you take it as a religious minority, whether you take it as a linguistic minority, and why are we excluding other minorities such as racial minorities, or there can be tribes which are minorities. Article 29 and 30 talks about minority on the basis of religion or language, but there can be other minorities also, and everyone has a feeling of being wronged. And from a pure philosophical point of view, there is no discourse. There is no discourse or dialogue between communities. Even today's program, which is a very great program, and I'm not making any negative comment over here, but we find that while speakers are from a varied society background, the participants are mostly from Muslim community. We should have had participants from every walk of life. Then only there could have been a dialogue. Don't take it as a criticism of this program. This was and is a great program. Maybe in the limited time span, it could not reach out to larger audience. Otherwise, surely many people would have joined. But I think dialogue is very, very, very important. This is all that I want to say, and thank you so much.
जावेद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा इशू था म्यूट अनम्यूट वाला। तो अभी जो है, अगर मंजूर हैं आप, डॉक्टर मंजूर अली, जो कि गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से हैं। मंजूर कनेक्टेड है? यस, मंजूर कनेक्टेड है? मंजूर कनेक्टेड हैं? अच्छा, मंजूर अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे मुझे लग रहा है तो वो थोड़ा कुछ इशू है सलीमुल्लाह साहब हेल्प कीजिए थोड़ा इसमें मंजूर कर रहा हूँ जी जी। मंजूर के बाद फिर खालिद और फिर फवाद शाहीन साहब और फिर आरिफ साहब, देन फिर और लोगों से भी हम लोग थोड़ा 2-2 मिनट मंजूर थोड़ा वेट करिए, कर रहे हैं सलीमुल्लाह साहब। काफी अच्छा रहा कि हम लोगों का टाइम काफी मतलब अच्छे से मैनेज हो गया है, तो थोड़ा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं और लोगों के साथ। पूरा तार पर सब खींचा जाएगा लेकिन तो मंजूर ट्राई करिए एक बार नहीं हो पा रहा है। मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मंजूर साहब। देखिए सलीमुल्लाह साहब, अगर मंजूर का नहीं तो किसी मतलब उनका खालिद का हो जाए जो IIDS से हैं। हाँ नहीं, मंजूर साहब को कहीं एक बार फिर ट्राई करें। मंजूर एक बार फिर ट्राई करिए। हो गया? हाँ हो गया शायद आवाज आ रही है हमारी? हाँ अभी आ रही मंजूर। Thank you so much for having me here, and I heard all the conversations around this minority related issues and the current situation in India, and I found that most of the topic has been covered. However, Ashok Bharti ji has given something really important as a lead, for us to discuss this further in further meeting, because I think that is the bone of contention and some kind of fear, anxiety between the two community, and we need to address. And he's not here. I thought I'll respond to him in a bit, because as a Muslim minority, I feel equal agony and pain when some Meghwansi boy was killed in Rajasthan, and equally as Junaid was killed in some incident. So what we, or especially I, wanted to say to Ashok Bharti is that, we are not fighting to replace the marginal space that one has occupied. Our fight should be to increase the horizon of those marginalized space and working together to increase that, rather than feeling anxiety against each other. So I would have elaborated a bit further on that, but I'll rest this point here and move on to the future of the minority issues, because most of the people have talked about the constitutions and Indian situation, state, and how it has been, right has been, dwindling in the current state of affair. So, but I wanted to look at the future, and for future issue, we have to look at what's actually going on around the, at the international level. And we found that there is a particular term that I found recently across in the social science,
and it is talking about the necro state, development of necro state. What does that mean? Necro means dead, a corpse. लाशों का state है ये. What this whole philosophy around the necro state, necro politics is that, you know, there has been the state very, you know, understandably, in a very organized way two different lives whose lives matter more than the other one, you know, and this particular necro state is developing around the, you know, restructuring that is going on there in the world, especially, you know, in economic sense, the concentration of wealth and resources that is going on within the broader framework of this economic concentration and resources by the elite of all the worlds in residing in different territorial geographical location. There, this necro state is developing. Necro state, you know, valued life differently. Those who are well connected with the state, they say that, you know, their life matter more than who are not, you know, are connected with the state. And in that sense, if you look at the you know, minority across the world, you know, their lives little matter, and that is why when the Black Lives Matter kind of a things happen, it resonates the whole idea that their lives are somewhere, the Black rights in US especially, was, you know, has been into, the rights has been jeopardized in the current state of affairs internationally. So, and this whole economic concentration with the development of necro state is danger to the future minority, future of the minority and the future of minority. So we have to be very, very clear about that, what's going and what is lying in the future. So its situation is really bleak for the minority across the international scenario. So that is one thing that I wanted to, you know, put before the audiences, that हमारा हालात आने वाले समय में भी जो developments हो रहे हैं उसमें और भी हालात खराब होने वाले हैं. अच्छी बात ये है इंडिया में कि जो marginalized group है, you know, we always keep on talking about 85-15%. Marginalized group, अगर सोशो इकोनॉमिक टर्म्स में हम ले तो जो है आप देखेंगे कि 85 वर्सेस 15 की बात की जाती है. ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज, वीमेन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एलजीबीटी इज पार्ट ऑफ दैट, जेंडर माइनॉरिटीज, यू नो, ये सारी चीजें जो है एक बड़ा तबका तैयार करती है इंडिया के अंदर जो है. सो दैट इज व्हाई आई फाउंड द you know, pre-2014 and 2014 onward, what kind of a politics we had and right now going on. And we found that the two set of idea that was there. One is that pre-2014 there were marginalized group with all sort of you know, their contradictions into them, but they were, you know, they were, you know, able to develop their uniqueness. So there was a space for all this kind of a uniqueness with the differences. They were living together. However, there were contradictions as well. So that was there. And some sort of a unity and tolerance were there. So pre-2014, the democracy was all about, you know, that diversity was there among the people. And you know, they were bargaining with the state, somehow coming together. Now, post 2014, what has happened? A kind of a homogenization politics that has started, and it started breaking the unity of the previous group that I was talking about, where, you know, religious minority, linguistic minority, gender, you know, minority, including LGBT and other minority, they were coming together and living with their uniqueness of identity. Now, this there has been assault on those diversity actually, and they're bringing people together. And you know, now people are, and Ashok Bharti sir, the whole idea was pointing toward that only, कि हमारा space मत लीजिए, आप जो है
पसमानदा वाले ओबीसी ग्रुप में ऑलरेडी हैं. The point is that Pasmanda in the word itself talk about the backwardness, backward, lagging behind. But putting Dalit Muslims, Dalit Christians into the OBC group itself, I think we have to look at the constitutionality of this whole idea. But yes, there has been. He led us to some kind of a dialogue in the futures, and I think we, those who are organizing these things, I think this is the line where we can, to start with interacting the people, other organization, and making broader identity, and to fight for the whole idea should be the fight to increase this the marginalized space rather than fighting to replace one another. I'll stop here, and thank you so much once again for giving me this opportunity. सही मंजूर, अच्छा वो किया आपने कि जो एस्पेक्ट्स है कि जो आर्टिकल 341 है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि मुस्लिम्स में 2% दलित मुस्लिम्स हो सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का है, और उसको लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़नी चाहिए. तो मेरे ख्याल से खालिद, अगर आप 2 मिनट थोड़ा टाइम दे पाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि हम लोग अभी 10 मिनट में इसको वाइंड अप कर देंगे. खालिद, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस, इज इट ऑडिबल? हाँ हाँ. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. बात तो सारी हो ही चुकी है, एंड we had the discussion on discrimination, both all the kinds of violences. Then the Amir sir has raised the issue of economic issues and the question of inequality. Then Bharti sir, actually he raised very interesting points. So I think I should touch those points, and with the help of my own research on education, particularly higher education, and then I will close. सबसे पहला सवाल जो उठता है, जो भारती सर ने उठाया, वो आई डोंट नो ये पूछना कितना सही होगा, बट क्या इस छोटे से केक में हम इतना खुश हो जाएं कि आपस में ही लड़ना शुरू कर दें? द स्टेट इज गिविंग यू और इज पुशिंग यू इन अ काइंड ऑफ रैट रेस कि आप ये है, आपस में आप लोग फैसला कर लीजिए कि रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कोई भी चीजें. अगर हम अपना एनालिसिस देखते हैं, और if I see other analysis based on the empirical evidences, if you see the evidences for last 2 or 3 decades, you can find that SC, ST and Muslims are consistently lagging behind the other social groups, particularly Hindu high caste. And this is happening despite SC, STs and OBC also, they have reservation, and Muslims have have this so-called minority institutions. Christians के पास भी है, बाकी और भी religious groups के पास है, कुछ ज़्यादा कम हो सकता है. तो सवाल ये उठता है कि रिजर्वेशन होने के बावजूद, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद, 70 साल के बाद भी SC, ST और Muslims particularly, why are they lagging behind, far behind Hindu high caste? नंबर्स की अगर बात करें, नंबर्स हम कोट नहीं करेंगे बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम. तो इस चीज को समझने की जरूरत है. दूसरा नंबर, फॉर एग्जांपल उन्होंने EWS का बात उठाया, EWS का भी बात उठाया, उन्होंने SC, ST रिजर्वेशन का बात उठाया, लेकिन एक चीज शायद वो मिस कर गए कि दोनों तरफ से लड़ाइयां चल रही हैं. SC, ST रिजर्वेशन की बात की जाती है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में मिलनी चाहिए. आई डोंट नो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज how much they are responding to that demand, and similarly Muslim and Christian SC, ST are demanding their share in this SC, ST reservation. So both groups are trying to get a share in other groups' benefit, but
I think the focus should be to build a common understanding and look for a formula so that a common demand could be raised, so that the size of this shares could be increased. For example, ये रिजर्वेशन की अगर आप बात करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम्स आर द मोस्ट बैकवर्ड ग्रुप इन टर्म्स ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एंड मुस्लिम्स एज ए होल, हम किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम्स एज ए होल, अगर आप उसमें ओबीसी देखें, सो कॉल्ड हाई कास्ट देखें, एससी एसटी भी देखें, जितना लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलता है सेकेंडरी एविडेंसेस से, तो दे आर फार बिहाइंड हिंदू हाई कास्ट एंड ओबीसीज, एंड इन सम केसेस मुस्लिम्स आर डूइंग लिटिल बेटर देन एससीज, एंड अदर केसेस एससीज आर डूइंग लिटिल बेटर देन मुस्लिम्स। तो इस बात को मेरे ख्याल से ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा नंबर, आमतौर से जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो आई थिंक वी शुड अवॉइड नॉट ओनली मेजोरिटेरियनिज्म जो हम लोग आज फेस कर रहे हैं, वी शुड ट्राई टू चैलेंज इट, बट हमें माइनॉरिटीज मेजोरिटेरियनिज्म को भी चैलेंज करने की जरूरत है, क्योंकि एक दूसरा रेटोरिक ये भी होता है कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी इन दिस कंट्री, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि क्रिश्चियंस आर डूइंग फार बेटर देन मुस्लिम्स, सिख्स आर डूइंग फार बेटर देन मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट आर आल्सो डूइंग फार बेटर देन मुस्लिम्स, सो all the share, all the cake should be distributed to Muslims. This also is not correct. हम लोगों को माइनॉरिटीज के अंदर की भी डाइवर्सिटीज को पहचानने की जरूरत है। There are many indicators where Sikhs are not doing better, Buddhists are lagging far behind the other groups. Sikhs, Buddhist, Christians का ट्राइबल की बात करें, सिख्स का दलित की बात करें, पंजाब में खास करके उनकी हालत काफी खराब है। बुद्धिस्ट में भी अगर आप देखेंगे, in terms of education they are doing good, but in terms of economic condition they are not doing well. तो इन तमाम चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद अभी जो लास्ट पॉइंट हम आज कहना चाहेंगे वो है डिस्क्रिमिनेशन पर। ये बात सही है, जैसा कि शुरू में दयाल सर ने उठाया, the kind of direct discrimination different communities are facing, different minorities are facing, लेकिन और उस पर बात करने की भी जरूरत है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की भी जरूरत है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का एक दूसरा फॉर्म है जो शायद मिस हो जाता है, बियॉन्ड दिस EWS। ऑफ कोर्स EWS इज नॉट a welcoming step, या we can think about what kind of reservation policy we should ensure to SC, ST, Muslims and Christians based on the mutual consensus. If someone think that instead of asking the share of Muslims, but I don't know how far this is justified on the very ground which is used for providing reservation. हमें ये बात याद रखना चाहिए, रिजर्वेशन इसलिए नहीं प्रोवाइड किया गया है कि टू एम्पावर द कम्युनिटी, बट स्टेट के अंदर डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेट में डिसीजन मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए किया गया है। रिजर्वेशन हो या माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी कम्युनिटी को कंप्लीट एम्पावरमेंट नहीं कर सकता है, इसके लिए एक लार्जर विजन की जरूरत है। लेकिन जो बात है जो मिस हो जाता है हमेशा, वो है कि पॉलिसीज के अंदर हिडन डिस्क्रिमिनेशन। अमर सेन अपने राइटिंग में जैसे पैसिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट जब कोई पॉलिसीज बनाती है, इवन इफ इट इज डिसकंटिन्यूइंग दिस स्कॉलरशिप, MNF स्कॉलरशिप या स्कूल एजुकेशन पर, दे प्रोवाइड जस्टिफिकेशन, वो जस्टिफाई करते हैं इस चीज को, बट दिस जस्टिफिकेशन हैज सम हिडन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको आइडेंटिफाई करने की सख्त जरूरत है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखें, बात किया गया है डबलिंग इनरोलमेंट, वी विल डबल द इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 2035, लेकिन इन तमाम चीजों में एक बात जो बहुत चालाकी के साथ छुपा लिया जाता है वो है परसिस्टेंट इनइक्वालिटी। आज डबल की बात कर रहे हैं, 2007 से 14 के बीच भी इंडिया में अगर हायर एजुकेशन की बात करें, इनरोलमेंट डबल हो गया था, लेकिन डबल होने के बावजूद जो कमजोर तबका है, SC, ST, मुस्लिम्स, वो जहां पर थे वहीं पर हैं। इवन इफ you see the extent of improvement among these communities, you will find that the lowest improvement has happened among these different groups. Last, school education. Policy documents को अगर आप देखेंगे तो ये दिखता है कि
policy documents, they celebrate this so-called universalization of school education. लेकिन इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर भी अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि ड्रॉप आउट किस कम्युनिटी का ज़्यादा हो रहा है, अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि लर्निंग आउटकम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या जो एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर किस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हाई है, वो प्राइवेट स्कूल्स जो एक सक्सेसफुल करियर इंश्योर करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो कमज़ोर तबके हैं वो बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं। एंड फाइनली एक बात हम जो कहेंगे वो ये है कि एजुकेशन के बाद भी द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ दीज ग्रेजुएट्स। वो लोग जो हायर एजुकेशन पास कर लेते हैं, जो जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता है एजुकेशन के लिटरेचर में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कि हमने एजुकेशन का एक्सपेंशन कर लिया एंड इट हैज़ एक्सपेंडेड अमॉन्ग एवरी कम्युनिटीज, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर again if you try to capture their condition, for example if you see the numbers of graduate unemployed, same patterns emerge. Muslims, SC, ST, they comprise highest number of graduate unemployed in this country. With this I close my discussion. Thank you, Khalid. सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज में सारे जो टारगेट्स हैं उसको बताया तो जाता है, बट ये नहीं बताया जाता कि हमको किसको टारगेट करना है, कौन जो है वो लैगिंग बिहाइंड है। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अभी हमारे पास मतलब 12:50 हो चुका है, तो आरिज भाई आप हैं? आरिज भाई, शायद आरिज भाई अभी नहीं है। हाँ नहीं। और एक फवाद शाहीन साहब का रिक्वेस्ट था, वो भी शायद नहीं है। फवाद भी नहीं है। हाँ, तो अगर किसी का एक दो क्वेश्चन अगर है तो लेते हैं, नहीं तो हम फिर हमारे तनवीर साहब जो चेयर कर रहे हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है सलीमुल्लाह साहब। तो मैं तनवीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने सिद्धार्थी कलमात से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Am I audible, sir? जी जी बिल्कुल। आज सुबह से हम पिछले 2 घंटों से एक मीनिंगफुल वेबिनार में अपने आप को शरीक किए हुए हैं। काफ़ी स्पीकर्स ने माइनॉरिटी राइट्स के वेरियस डायमेंशंस को इस वेबिनार में पेश किया। मैं उन तमाम का होलिस्टिक एजुकेशन बोर्ड की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रेंड्स, माइनॉरिटी राइट्स एक डे आज हम मना रहे हैं, और इस डे की क्या इम्पोर्टेंस है इसको जनाब रशीद आगवान साहब ने इन द बिगिनिंग ऑफ वेबिनार रखा। माइनॉरिटी को क्लासिफाई करने के लिए जो कैटेगरी बनाई गई है, उसके जो उसूल हैं, उसमें एक फीचर, एक उसूल उसका ये है कि रिलीजन बेसिस पर भी माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है। सो रिलीजन इज वन ऑफ द फीचर एंड वन ऑफ द क्या कहना चाहिए, making any group as a minority group. इस वेबिनार में एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के ज्यादा लोग शरीक हैं, जाहिर बात है मुसलमान हैं। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि जितने सेमेटिक रिलीजन हैं और उनके अलावा रिलीजन भी हैं, इन तमाम की एक खास बात यह है कि ये सारे रिलीजन उस काम को बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं जो अप्रेस्ड क्लास के राइट्स के लिए किया जाता है। तो आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं वो एक बड़ी अप्रेस्ड क्लास के
राइट्स को स्टेब्लिश करने और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये वेबिनार रखा है। और जाहिर बात है, अप्रेस्ड क्लास के राइट्स की बात जब होगी तो सिर्फ एक दिन मनाने से नहीं होगी। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट हैज टू बी डन कंटिन्यूअसली। आज हमने वेबिनार में माइनॉरिटी राइट्स को एक माइनॉरिटी राइट के एक डायमेंशन पर बात करने की टॉपिक दी थी, उसको डिस्कस करना हमने चाहा था, और वो था एजुकेशन। सर्टेनली एजुकेशन पर बात हुई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हुई, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 29 के बारे में बात हुई। आज हमारे देश में माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स को भी बहुत ज्यादा थ्रेट है। हम देख रहे हैं कि मदरसास के साथ क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आसाम में मदरसास को किस तरह बंद कर दिया गया। हम ये भी देख रहे हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इवन यूनिवर्सिटीज को कैसे थ्रेट है। हमने इसको भी एनालाइज किया कि माइनॉरिटीज के जो स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स, उनका क्या हाल है। यकीनन राइट्स बहुत हैं, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं और वेरियस डायमेंशंस पर हमको बात करने की जरूरत है। कहा जाता है कि इन एनी डेमोक्रेसी अवेयर्ड माइनॉरिटी इज अ मेजॉरिटी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस देश में जितना बाशऊर होना चाहिए, जितना अवेयर हमको होना चाहिए, उतना अवेयर्ड हम नहीं। हमको हमारे राइट्स के वायोलेशन कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसका शऊर हासिल नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं। हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूशंस के, हमारे स्कीम्स के बारे में और हमारे राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसके बारे में डेटा नहीं होता है। इसका कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं हमने किया है। हम डिपेंड करते हैं कुछ गवर्नमेंट के डेटा और इंफॉर्मेशन पर, और कुछ वो इंफॉर्मेशन जो सेकेंडरी होती है, और बहुत सारे इश्यूज की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। तो आज हम ये तय करें कि क्या ये पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि हम अपने राइट्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन और सही डेटा हम हासिल करें। ये तीसरी बात थी। चौथी बात ये है कि हमको, जैसा कि बात आई कि ये सिलसिला आगे बढ़ाना है। अशोक भारती जी की बात के बाद बहुत सारे स्पीकर्स ने उन्होंने जो सवालात रेस किए उस पर बात करनी शुरू कर दी, होना भी चाहिए। उन्होंने जो कहा कि जब बात बुद्धिस्ट की होती है तो हम कुछ नहीं करते, अगर हम नहीं करते हैं ऐसा तो हमको सोचना चाहिए। हमने तो ये कहा कि मुस्तज़ईफीन के काम के लिए, अप्रेस्ड क्लास के लिए काम करना बहुत बड़ी नेकी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस पर हमको प्लान करने की ज़रूरत है। उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो इस वेबिनार में हमारे पार्टनर हैं। आखिरी बात ये कि हमने इस वेबिनार को एजुकेशन के डोमेन के हद तक रखा था, लेकिन बातें फैल गई हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत इश्यूज हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर हमारा फोकस था। हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस तरह बनाई गई और इसमें माइनॉरिटी राइट्स को किस खूबसूरती के साथ वायलेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पॉलिसी में वैल्यूज, कल्चर की बात कही गई है, रूट्स की बात कही गई है। इंडियन कल्चर को सिंगुलर टर्म में इस्तेमाल किया गया है और इंडियन फिलॉसफी को
इस्तेमाल किया गया है। So what is the definition of Indian philosophy and what is the definition of Indian culture? हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि इंडिया इज ए गुलदस्ता ऑफ वेरियस कल्चर्स, लेकिन हमारी पॉलिसी ये कहती है कि हम अपने स्टूडेंट को एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक कल्चर और एक फिलॉसफी की बात करेंगे। तो इस तरह ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इसके दूरगामी असरात पढ़ेंगे और इस पर हमको नोटिस लेने की ज़रूरत है। और बात ये भी आई कि किस तरह वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और एग्जीक्यूटिव माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स को के लिए थ्रेट बने हुए हैं। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट आती है या फिर और भी जो रिपोर्टें आती हैं उसमें टारगेट किया जाता है सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। स्टार्टिंग में रशीद आगवान साहब ने कहा था कि किसी डेमोक्रेसी को नापने के लिए ये पैमाना है कि उस डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज के राइट्स को कितना प्रोटेक्ट किया जाता है। आज हमारे देश में टर्म माइनॉरिटी एक ऐसा टर्म बन गया है जो बहुत ही नेगेटिव मीनिंग लिए हुए। आज माइनॉरिटीज के राइट की बात ना पब्लिक डोमेन में होती है, ना पार्लियामेंट में होती है भी तो कम होती है। पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस में माइनॉरिटी राइट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक ही जगह माइनॉरिटी का टर्म इस्तेमाल हुआ है। माइनॉरिटी में मुस्लिम और दीगर माइनॉरिटीज को किस तरह ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। एक तरफ तो माइनॉरिटी टर्म यूज किया गया और दूसरी तरफ सारे माइनॉरिटीज को सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के बास्केट में डाल दिया गया। एंड वी नो दैट the issues, educational issues of various minorities are different. मुस्लिम माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इश्यूज अलग हैं और दूसरे माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इश्यूज अलग हैं। सबको अलग अलग डील करने की ज़रूरत है। तो पार्टिसिपेंट्स, आपने एक अच्छे वेबिनार में हिस्सा लिया। हमको चाहिए कि हम इस सिलसिले को जारी रखें और इस पर सिर्फ बात ना हो बल्कि कुछ एक्शन प्लान बने और हम उस एक्शन पर कुछ काम करने की उस प्लान पर कुछ काम करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जावेद साहब, आप अनम्यूट कीजिए जावेद साहब अपने आप को। हाँ, शुक्रिया समीला साहब, आप फिर वोट ऑफ थैंक्स के जरिए प्रोग्राम को खत्म करवाइए। तो मैं सबसे पहले तो जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स जो इस प्रोग्राम में जो हैं शरीक हुए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, हमारे रिक्वेस्ट को जो है अपील किया और इस प्रोग्राम में शरीक हुए। और बिलखुसूस हमारे जितने आज के स्पीकर्स थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिर्फ 1.5 दिन के हमारे रिक्वेस्ट पर उन लोगों ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो हमारे सामने दिया। हम इस दिन को आज सेलिब्रेट कर पाए ताकि इसको स्ट्रेस कर सकें कि हाँ, हम लोगों को जो है कुछ करना है। तो इसके लिए आप तमाम हजरात का शुक्रिया हमारी इस तमाम कोशिश में जो है शरीक हुए। मैं इसी के साथ इस प्रोग्राम के खत्म होने का जो है ऐलान करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।